Assalamualaikum everyone. My name is Namra and welcome to another webinar session hosted by Institute of Emerging Careers. और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है AI powered by UI UX. And for this, I would like to welcome our speaker, Mr. Shaheer Malik. Thank you so much for joining. If you could kindly give a small brief introduction about yourself. I'm sorry, I'm sorry to interrupt you. आपकी आवाज़ audible नहीं है. If you can kindly see to that. Let's do this. Okay. So, am I audible now? Yes, you're audible now. Hello. Okay. So thank you so much, Namra, for inviting me, first of all. And as you said, my name is Shaheer Malik, and I'm a UI UX designer. Initially, I was a writer, and then I moved to the technical writing part, and then I moved in the field of UI UX designs, user interface and user experience designs, and developed I think more than 100 different designs of mobile apps and web apps, dashboards from the clients all over the world, including USA, Dubai, and other countries. So I was also a speaker at UX Global Summit USA in March 2023, and now I'm going to Dubai for GITEX as a only Pakistani speaker right now. So that's my brief introduction as a designer. All right, perfect. Thank you so much. So what we would like to talk about today is about AI technologies और उनका impact जो है वो UI UX design की जो है वो industry में. तो सबसे पहले, what do you think that how can user interface and user experience can enhance the AI technologies while providing those like global products and services? Okay, first of all, the thing is we have to understand that what is user interface and user experience designs. Uh, Although these are the technical terms, these are the technical fields. जो कि लोग there is not a single course in Pakistan right now कि जो आपको user interface design सिखाए, user experience design सिखाए. मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद पता नहीं आपकी नज़र में शायद कोई हो इस तरह, या आपका इंस्टीट्यूट करता हो इस तरह के कोर्सेज वगैरह, बट इस तरह का कोई ऐसा कोर्स नहीं है. जो स्टूडेंट्स होते हैं दे लर्न देमसेल्फ द डिफरेंट टूल्स लाइक फिग्मा लर्न कर लिया उन्होंने, फ्रेमर लर्न कर लिया, इन्विजन कर लिया, एक्सटी लर्न कर लिया, एंड उसके साथ वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं. बट द सेकंड थिंग व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इज द एस्थेटिक्स. जो आपकी जो क्रिएटिव पार्ट आता है, you can become a doctor, you can become an engineer, you can become anything by studying different things, but aesthetics ऐसी चीज होती है जो कि गॉड गिफ्टेड होती है कि जब आप ऐप डिजाइन करो, you have to keep in mind the color palettes, the all the sizing and all the things that should be intuitive to eyes and all these things. लेकिन मैंने बहुत से ऐसे यूएक्स डिजाइनर्स देखे हैं जिन्होंने वो फील्ड छोड़ दी बाद में, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें टेक्निक्स आती थी, टूल्स आते थे, फिग्मा यूज करना आता था, लेकिन उनके पास एस्थेटिक्स नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी. तो ऑन द अदर हैंड अब जब जिसके पास क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल स्किल्स हो जाए, वो आई थिंक यूआई यूएक्स डिजाइनर इज अ गुड एग्जांपल, हम उसे कह सकते हैं. अब जो second thing we are joining right now is AI technologies with user interface and user experience design. मैं अभी अपनी स्पीच लिख रहा था जो कि चला 18 अक्टूबर दुबई में मैंने डिलीवर करनी है, तो उसमें मैंने एक पार्ट लिखा है मैरिज ऑफ एआई एंड यूएक्स डिजाइन. ऑल्दो आई एम नॉट अ टेक्निकल मैच मेकर, बट एक टर्मिनोलॉजी इस तरह से बनाई है कि जो artificial intelligence is a very very technical, very very you can say a dry or something. The end product of AI is a very great thing, but the development part is very very dry when you play with machine learning and all these things. तो इसीलिए अब जब AI इंटीग्रेट हम करें UX में, वो कौन कौन से टूल से करते हैं वो मैं नेक्स्ट आई थिंक आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं एलैबोरेट करूंगा जो आगे आप पूछेंगे या कोई.
तो उसमें ये चीज़ है कि AI can greatly enhance, you can say, the user interface and experience by personalizing the content, automating tasks and predicting user needs, optimizing layouts and creating the palettes and the natural language understanding, and all these capabilities create a tailored and efficient experience कि आप customized experience बनाने के लिए एआई आपका एक तो टाइम कंजम्पशन जो है वो रोक देता है काफी, और आप यू कैन कम अप विद अ गुड डिजाइन बाय द यूज ऑफ एआई. ऑलराइट परफेक्ट सो लाइक कीपिंग द बॉल रोलिंग तो अगर आप कोई कौन सा एग्जांपल शेयर कर दे लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लाइक एआई पावर्ड यूआई यूएक्स इंप्रूवमेंट जो हमने अभी रियल वर्ल्ड में जो है वो देखी हैं. अच्छा, रियल वर्ल्ड में अभी इसी वजह से थोड़ी सी हाइप एआई की हुई है, क्योंकि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है हमारा, तो उसके साथ ये चीज आ गई कि जैसे चैट जीपीटी हुआ है, लोगों को पता चला एआई भी कोई चीज होती है, वरना सिर्फ जो टेक्निकल कंपनीज में काम करते थे, मशीन लैंग्वेज के साथ काम करते थे, सिर्फ उन्हें पता था कि एआई भी कुछ होता है. तो जैसे ही चैट जीपीटी की लॉन्चिंग हुई है, इसी साल आई थिंक हुई है, यहाँ लास्ट ईयर दिसंबर में हुई है, तो उसके बाद पता चला. बट बिफोर दैट हम लोग नेटफ्लिक्स यूज करते हैं. तो नेटफ्लिक्स पे मींस अगर कोई आप एक्शन मूवी देखें, तो या कोई इस तरह मूवी देखें, एक दो आप देख लें एक्शन मूवीज या कुछ, तो आपकी रिकमेंडेड मूवीज में वो चीज आ जाती है कि उसी तरह की मूवीज जो हैं वो आपको बताता है कि यू कैन आल्सो व्यू दिस दिस एज द सेम सॉर्ट ऑफ एक्शन दैट यू वॉच दिस. तो उनका रिकमेंडेशन एल्गोरिदम नेटफ्लिक्स का है, and they are using this thing, they have developed this thing through machine language, and wo AI system, I think they are using it from the last 6 to 7 years कि हम नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं. ई कॉमर्स जाइंट्स जैसे amazon हो गया, वो एआई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करता है. वो ये इस हाइप से, चैट जीपीटी की हाइप से पहले वो एआई यूज कर रहे हैं. चैट जीपीटी से पहले हम बहुत से ऐसे टूल्स यूज करते थे, जैसे जेस्पर यूज करते थे, कॉपी एआई यूज करते थे कंटेंट क्रिएशन के लिए, लेकिन वो लिमिटेड था सिर्फ अ चंक ऑफ पीपल, जो टेक्निकल लोग थे, सिर्फ उन्हीं तक. तो चैट जीपीटी ने क्या किया, और दे ओपन द हॉराइजंस, एपीआईज उन्होंने देने शुरू कर दिए, एंड आगे से आगे हर सॉफ्टवेयर कंपनी ने वो इंटीग्रेशन करके डैली आ गया, और उसके बाद मिड जर्नी आ गया, फिर उसके बाद आगे से आगे उन्होंने स्टार्ट करने शुरू कर दी. तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, मैं पुरानी एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स, amazon, Siri, Alexa, these are all the examples of AI developed by machine learning, machine language. राइट नो आई थिंक आपका जो पॉइंट है दिस इज़ क्वाइट गुड बिकॉज इवन मुझे भी जो है वो एआई में चैट जीपीटी के थ्रू ही पता चला था. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ जैस्पर और कॉपी एआई, फिर मुझे बाद में लाइक कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर दैट तो आई वाज लाइक अवेयर ऑफ लाइक दीज सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट फॉर कंटेंट राइटिंग एज वेल और कॉपी राइटिंग. तो आई थिंक दिस इज लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल लाइक यू हैव शेयर्ड. उसके साथ साथ इफ यू कैन लाइक एम्फोसाइज ऑन के कौन से ऐसे की स्किल्स हैं या नॉलेज हैं या जो आप मेंशन करते थे कि यू विल शेयर लाइक द टूल्स जो इस like AI driven design landscape में like the UI UX designers should be aware of or they should work on it. अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे टूल्स आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपको रिसर्च पार्ट में पहले हम जाएंगे, तो क्रिस्टल एआई एक ऐसा टूल है जो कि आपको उसका प्लगइन भी है, जो कि आपको यूजर पर्सोनास जो होते हैं वो क्रिएट कर देता है. आपके जितने भी, मतलब आपने पर्सोनास फाइंडिंग के लिए आपको वो ढूंढना नहीं पड़ता, और वो आराम से जो है वो आपको क्रिएट करके दे देता है. रिसर्च टूल्स बहुत से इस टाइम मार्केट में हैं, और डिज़ाइन टूल्स अगर हम बात करें तो विजिली, विजिली इज़ अ ग्रेट डिज़ाइन टूल. यूएसआर्ट की अगर हम बात करें, तो यूएसआर्ट में तो ऐसा है कि इट्स लाइक अ जनरेटिव एआई, जस्ट लाइक चैट जीपीटी. उसमें आप ये लिखें कि आई वांट एन ऐप, फूड डिलीवरी ऐप, तो वो पूरे की पूरी फूड डिलीवरी ऐप फ्रॉम द होम पेज टू द चेकआउट पेज वो आपको क्रिएट करके सामने दे देता है, एंड यू जस्ट हैव टू एडिट दैट एक्सपीरियंस टू पर्सनलाइज इट, नथिंग एल्स. तो आप उसको एडिट करें, पर्सनलाइज करें, तो आपको क्रिएट हो जाती है चीज. विजिली, विजिली इस टाइम पे मैं अगर कहूँ तो मेरा फेवरेट टूल इस टाइम पे बन गया है
for over the last few months जो उन्होंने improvements किए हैं, and right now they are not charging a single penny. और ये भी काफी लोगों को विजिली का नहीं पता कि वो अभी प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे नहीं आए. उन्होंने सिर्फ अभी अपनी हाइप बना रहे हैं कि वी आर फ्री ऑफ कॉस्ट and we are providing more than what Figma is providing. Although they are not Figma, अब थोड़ा सा कोडिंग एंड डेवलपमेंट साइड पे भी चला गया है कि क्विक कोड्स और कंपोनेंट्स वेरिएबल्स और उस तरफ बहुत फिग्मा एंटर हो चुके हैं. तो नॉट दोज, लेकिन विजुअली इज आई थिंक अ ग्रेट डिजाइन टूल के जो सेल्फ मैनेजमेंट एंड ऑटोमेटिक ऑटो लेआउट एंड ऑल दीज थिंग्स, इस तरह के टूल्स जो हैं वो बहुत आसान कर रहे हैं कि मींस टाइम बहुत बचा रहे हैं. जो कि यूएक्स डिजाइनर्स पर आवर चार्ज करते थे, अगर 70 टू 80 आवर्स लग रहे हैं तो 10 टू 12 आवर्स में भी वो काम कंप्लीट कर देता है. और ऑटोमेटिक वायर फ्रेमिंग है जो आपने बनाया, वायर फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, ना कि अलग आपको बनाना पड़ रहा है. तो ये भी एक बहुत मतलब जो डबल टाइम लगता था वो फिनिश हो चुका है इससे. So yeah, नहीं, I think that's a really good tool जो आपने share किया है visually. If I'm not wrong, I would also like very much like to see कि उसका क्या काम है. As you said, it's free of cost right now and to experience and like explore what they are doing. So again, one more thing that जब हम AI softwares की बात करते हैं, especially considering like for UX design, UI design और design के perspective से, a lot of people feel कि it's like taking away the manual labor. उस पर जो है वो उनका क्रेडिट जो है वो दे आर नॉट गिवन दैट क्रेडिट. तो व्हाट एथिकल कंसिडरेशंस आपको लगता है कि डिजाइनर्स शुड कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग एआई इन यूआई यूएक्स? अच्छा, अभी हम एक चीज में बात करें कि एथिकल कंसिडरेशंस जो एआई की हैं, वो अभी तक कहीं भी डिफाइन नहीं हो पाई. कि एक मैं अभी थोड़े दिन पहले एक आई वाज वाचिंग अ न्यूज़ के एक पेंटिंग जो थी वो यूएस में के कहाँ पर उसने प्राइज विन किया. एंड वो जो पेंटिंग थी वो उसने एआई से जनरेट की थी, एंड उस पेंटिंग ने प्राइज विन कर लिया था. तो आई थिंक दिस इज नॉट अ थिंग के ethically it's not good ke you're generating this thing and it's not your art, it's a machine language's art. But the thing we should afraid of is this कि machine language के कितनी एडवांस हो चुकी है कि they are winning the prizes and competing the humans. जो ह्यूमन आर्ट को वो जेर करके वो प्राइज लेके गया है. तो दिस इज थिंग वी शुड अफ्रेड ऑफ. बट right now and till the next few years I can say that we cannot say that AI is a complete uh, thing to that AI can work completely 100%. We can use AI as a collaborator in our work. एआई कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमारा वर्क आसान कर रहे हैं. आप कंटेंट भी चैट जीपीटी 4 से जनरेट कर लेंगे, बट एट द एंड यू नीड अ ह्यूमन कि उसको ह्यूमन टच देना पड़ेगा. आगे नो डाउट कुछ चीजें जो हैं चेंज हो रही हैं, मतलब कि जो एआई जाहिर बात है एक ह्यूमन से ज्यादा एफिशिएंट है. अब एफिशिएंसी का तो अंदाजा है स्टार्ट से ही हो गया था ना, जब कैलकुलेटर्स आए थे कि ह्यूमन की कैलकुलेशन से तेज वो कैलकुलेट कर देता था. बट द थिंग इज वी आल्सो न्यूज अकाउंटेंट, वी आल्सो नीड अकाउंटेंट स्टिल नाउ. तो मतलब कोई भी ऐसी चीज है, वो क्विक बुक्स आ गए, वो उसमें भी एआई टूल्स आ गए हैं जो कि पूरी अकाउंट मैनेजमेंट कर देते हैं, बट वी स्टिल नीड अकाउंटेंट्स. तो इसमें ये चीज होती है, दे आर कोलैबोरेटिंग द ह्यूमंस. तो सेकेंडली कुछ एथिकल कंसिडरेशन जैसे एआई लॉज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं अभी. वैसे यूएस में क्रिएट हो रहे हैं. आई डोंट नो कि उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करेगा और कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं. इट्स अ लार्ज लैंडस्केप and not even in single territory. And every territory, every part of the world has its own laws and all these things. But AI driven features जो हैं उनकी एक कंट्रोलिंग जो है उस पे it's still the world is working on, and it will go on like this. पता नहीं अब आगे क्या रिजल्ट निकलेगा इस चीज का.
या आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आई बिलीव के एट द एंड ऑफ द डे हमें बिल्कुल नहीं पता कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। नो वन, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चैट जीपीटी विल कम एट सच अ फोर्स एंड टेक ओवर एंड एवरीवन विल स्टार्ट यूजिंग इट, और उसका इतना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। सो आई थिंक आपने जो एक पॉइंट शेयर किया है कि देयर शुड बी लाइक अ बैलेंस बिटवीन आप जो एक एआई सॉफ्टवेयर यूटिलाइज कर रहे हैं और साथ में आपकी जो एक ह्यूमन मैनुअल लेबर है उसकी जो इंटरफेरेंस है दैट शुड एग्जिस्ट, ताकि ऑब्वियसली एआई कैन नॉट गिव यू the proper end result what you want। उसमें यू नीड समवन हु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, सो दे कैन लाइक शेप इट इनटू व्हाट यू नीड। तो इसमें आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। उसके साथ साथ व्हाट अगर आप थोड़ा सा और इसमें कौन सा यू कैन शेयर योर ओन थॉट्स कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं या कंसिडरेशंस हैं जो बिजनेसेस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन इंटीग्रेटिंग यूआई एआई इनटू देयर यूआई यूएक्स डिजाइन। चैलेंजेस अभी वो तो यही होंगे कि जैसे कि जो यूआई यूएक्स के हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको मीट अभी तक एआई नहीं कर पाया। कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं कि मैं मिड जर्नी से कोई चीज़ निकालूंगा, वैसे एक मैं उसे कहता हूँ कार हायर ऐप मुझे चाहिए। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मतलब वो डिज़ाइंस क्रिएट कर देता है, बट उसमें जो उसकी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि लाइक व्हाट शुड बी द हैमबर्गर आइकन, व्हाट शुड बी हाउ वी शुड अलाइन द कैरोसल्स एंड द आइकन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वहाँ पर जो है अभी देयर इज अ बिग गैप। तो वो अभी तक फिल होना, वो इट्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। जब एआई एफिशिएंट होगा, देन द बिजनेसेस एंड एआई विल कम टू अ पॉइंट कि हम इसको किस तरह से यूज कर पाए। अभी इट्स जस्ट कोलैबोरेटिंग, आई थिंक 20 to 30%। तो अभी इट्स वेरी मच अर्ली टू से कि क्या मतलब आगे इसको लेके चलेंगे। All right, perfect. And I believe we have a lot of our audience जो UI UX designers हैं, and इनके लिए I would like to like bring forward a question कि आप उनको ऐसे क्या advice देना चाहेंगे for new designers जो अपने skill set और portfolio में जो है वो AI जो skill set है उसे incorporate करना चाह रहे हैं। अच्छा, दे शुड नो अबाउट, अगर सिर्फ एआई की बात हो तो दे शुड नो अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एक आपने ये देखिए कि एक नई फील्ड इमर्ज हुई है एंड दैट्स कॉल्ड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि जिसे प्रॉम्प्ट अच्छा लिखना आता हो। अब मैं कुछ पीछे देख रहा था कि एक टूल आया था, जीरो जीपीटी, और एक और टूल है कंटेंट स्केल। उसमें ये होता है, जो आप चैट जीपीटी से आप जो भी कंटेंट जनरेट करेंगे, वो आप उसमें डालेंगे तो वो आपको बता देगा इट्स जनरेटेड बाय चैट जीपीटी। तो वो एक ये कर्व करने का टूल है, क्योंकि सारी बात है प्लेजरिज्म नहीं पकड़ सकते, देयर इज नो प्लेजरिज्म। तो एक एआई लैंग्वेज पकड़ने का ये टूल आया है। तो अब एक जरा सी मैंने ट्राई इस तरह की थी कि जो कंटेंट लिखा था उसको चैट जीपीटी को मैंने ये चीज कहा था, राइट इन अ ह्यूमन लाइक फॉर्म। और वो जब मैंने कंटेंट जनरेट हुआ तो वो मैंने जीरो जीपीटी से भी चेक किया, कंटेंट स्केल से भी चेक किया, उन्होंने कहा इट्स रिटन बाय ह्यूमन। कि मींस आपको जब रोबोट से बात करनी आनी चाहिए, आपको चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आप यूज करें, उसको अपनी बात समझानी आनी चाहिए। और अगर हम चले जाएं डेवलपमेंट पार्ट में, तो मशीन लैंग्वेज डेवलपमेंट में या एआई प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, तो उसमें यही चीज है कि डे बाय डे एआई का एक फॉर्मूला ही यही है कि डे बाय डे इट्स बिकमिंग एफिशिएंट। कि जितनी इनपुट्स आ रही हैं, जितने ज्यादा प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, डे बाय डे वो ट्रेन होता जा रहा है, और ट्रेन होता होता उसकी डेली एआई की इट्स पावर इज इंक्रीजिंग। पीछे से मशीन लैंग्वेज के कोड इंक्रीज करेंगे, जितने भी प्रॉम्प्ट्स आए हैं उनको ग्रिप करके उन प्रॉम्प्ट्स को भी बीच में फिर उस पर वर्कआउट होगा। तो इसीलिए फिर उसमें जो पैरामीटर्स हैं उसके भी इंक्रीज होते जाएंगे। Just like ChatGPT 4 is 174 billion parameters, it gives answers in this much parameters, and I think we're 10 billion ChatGPT 3 में है, ये कुछ इसी तरह बहुत ज्यादा कम है उसमें। तो this is the thing.
ऑलराइट, परफेक्ट। तो अभी you've also discussed कि हमारे जो करंट ट्रेंड्स हैं इन लाइक एआई ड्रिवन यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सो व्हाट डू यू थिंक? आई नो एज वी मेंशन बिफोर कि हमें फ्यूचर का पता नहीं होता, बट इन अपकमिंग ईयर्स आपके लिहाज से फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर एक्सपीरियंस, व्हाट शुड वी सी इन यूआई यूएक्स डिज़ाइन व्हेन इट कम्स टू लाइक एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज? उसका क्या उस पर इम्पैक्ट होगा? For designers, I can say that I think they will just be aesthetically sound. Like जब वो create करें कुछ user experience create करें, तो एक तो उनका time save होगा ही होगा through AI technologies. Research part उनका बहुत ज़्यादा save हो जाएगा कि एक दो tools हैं जैसे Crystal हो गया, another AI researcher हो गया, और चीज़ें इस तरह से उनका research part वहाँ से उसका complete हो जाएगा. देन आगे आ जाएंगे वायर फ्रेमिंग पे. वायर फ्रेमिंग भी उनकी जनरेटिव होगी. कंटेंट अवेयर फिल जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है. एडोब ने भी लॉन्च कर दिए, कैनवा ने भी लॉन्च कर दिए, कंटेंट अवेयर फिल आ गया. तो इस तरह से क्या होगा कि वो डिजाइन कंप्लीट करने में उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आई थिंक हो सकता है कि शायद एक ही दिन में दे विल क्रिएट अ होल डिजाइन ऑफ द होल ऐप. द 20 to 22 स्क्रीन्स वो क्रिएट कर सकेंगे एक ही दिन में. लेकिन उसमें जो अब फाइट होगी वो आर्टिस्टिक फाइट होगी कि हाउ मच आर्टिस्टिक माइंड यू आर यूजिंग. एआई आपका काम करेगा, बहुत सा काम करेगा, 80% तक शायद कर देगा. लेकिन आपने उसको एस्थेटिकली किस तरह समझाना है, किस तरह से उससे काम करवाना और अपनी कितनी इनपुट देनी है. तो दिस विल मैटर इन द नेक्स्ट ईयर्स. तो द वर्ल्ड विल बी मच मच मोर competitive, एंड सैलरीज नहीं गिरेंगी, ना ही आई थिंक वेजेस गिरेंगी. एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी, ये चीज. All right. And I think that also answers a question. I saw in the chat someone asked ke like AI can replace a UI UX designer, right? So I think उसमें आपने थोड़ा सा उसे explain कर दिया है कि it should be like it would go hand in hand, कि आपका जो एक user एक human experience है that would align with the AI technologies, कि आपको skill set के through उसे बेहतर कर सकते हैं. Anyway, I think that is like good enough. आपने इतनी उनसा information share किया है, you became part of this webinar. Is there anything else you would like to add on? No, thank you so much. And at the end, I want to say that uh, we should not be afraid of what AI is doing. So we should get ourselves aligned to the new technologies. हमें न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना चाहिए कि अपने आप को उस हिसाब से अलाइन करना पड़े. एआई के अलावा कल नेक्स्ट फ्यू इयर्स में कुछ और भी आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा. देन वी हैव टू बी एफिशिएंट इनफ कि हम उसे ग्रिप करके उसको आगे से आगे अपनी फील्ड में कैसे इंटीग्रेट करें. So this is the thing that I want to say to the people who are in the emerging career stage. All right. Thank you so much for joining. Thank you so much for being part of this session, and to all of our viewers as well. I hope that this was an insightful session for you and that you got to learn something new and different. And once again, thank you so much, everyone. Thank you so Bye. much. Thank you. Yes. Allah Hafiz.